Hi, good evening, everyone. Is my screen visible? Yes, it is visible. Okay, so let's start. So today we'll cover only week six again because week six has got some, 5 or 6 important topics. So we clear all those concepts. So first again, the week six again, we start with the games of incomplete information. So what is the game of incomplete information? That one player he does not have the complete information about the another player. Till now, we have been seeing the games where there is complete information and the payoffs are given. For example, uh, this was one game where it was given about the boys and girls, that these are two musicians, Bach and Silveski, and this is boy and this is girl. And when they go, so payoffs they know. However, there might be a case where there are the boy does not know what kind of girl is that girl. So there might be a girl, one type okay, who wants to meet, and the second girl okay, who wants to avoid. So before going to the game, let's cover certain theory part. So in the asymmetric information, there are two types of players. One is better informed, and the second is less informed. So better informed, like in this game, the girl is better informed because she knows that boy has got only two choices, and what are the payoffs here, Back and Silversky. But the boy is less informed because he does not know which kind of girl is there, whether it is she is meat type or she is avoid type. So what can happen in these cases, that a better informed player, he or she either can mislead or conceal what they know. They can reveal only selected information in a truthful manner to gain. And third, okay, they can signal unobserved information in a credible manner. Whereas a less informed person, either they can elicit information by screening, that they ask the information, or they choose to remain ignorant, which is known as credible deniability. It is from the theoretical point of view. So there is a simple question, that why not simply ask? For example, there is a less informed person, why he cannot ask? Because there are two issues. If he asks, then the better informed can give only selected information, or it means he can manipulate the beliefs. Second is uh, the less informed person, he can give signal jamming. He can uh, this better information informed person, he can confuse others by using a mixed strategy. Now, with this theoretical part, we go to this game. What are the game settings? Boy asks girl to go for a concert. Choices Bach and Swarovski. There are two music composers, and the payoffs are this. If a simple game. However, if there are two types of girls, one is meat type. So in the meat type, you see when they are going to the same concert, they get payoff. If they go to a different concert, then payoffs are 0 0. So this is for the meat type. Whereas in our type, the opposite happens. That if they go to the same concert, then for the avoid type girl, the payoff is 0. For the boy, it is 2. It remains 2. However, for the girl, when they go to for different concert, then there is a payoff for the avoid type girl. And when they go for SS, then again there is a payoff for boy, but there is 0 payoff for the girl. So how to formulate this game? Basically, that how to I'll just copy this and so now the in this example, the boy is less informed, LI, and the girl is better informed, so she can manipulate. Better informed, she knows about the boy cases. So how to formulate this game? The professor he covered that in the starting we say that nature is playing the game, and for example, there is a half chance that girl is meat type, and there is half chance that girl is avoid type. So now we come to girl. We come to girl. Now this girl can take a
call that she can goes for example, we say this is B1 S1 and this is B2 S2. So here she goes for B1, she goes for S1, here she goes B2, she goes for S2. We come to boy. Now boy can go select only B or S. So this how we formulate an extensive form of game. So I'll write boy, boy. So if we remember earlier discussions on this extensive form, then how many strategies are there for girl? Strategies for girl. She has got B1, B2. She has got B1, S2. She has got S1, B2, and she has got S1, S2. Is that okay? Clear? And strategies for the boy remain only two, either B or S. Is that okay? Clear? Okay. So I'll assume that okay, this is clear. So now we can form the payoffs in the this case. Okay. For example, this is boy. He can play only B and S. There is now the for the girl, she has got four strategies: B1, B2, B1, S2, S1, B2, S1, S2. And now we can calculate the payoffs from here. So how we will calculate, okay, if somebody can guide me, how we will calculate this B1, B2, B1, B2? So this B1, B2, which is there, I'll explain here only. This B1, B2 means B1 and B2. And we know the probability of BB1 is half and probability of BB2 is half. So for boy, for example, if we calculate BB1, if we see, and we can write the payoffs here. So B1, the first game, BB1 is 2-1. B1S is 0-0. S, sorry, this is, okay. Here, girl is playing S and he's playing B. So girl is playing S, he's playing B. So BS is again 0-0 and SS is 1-2. And we complete this part also. This is for the second game. B, BS, B is 2-0. BS is 0-2. Girl is playing B, he's playing S, so it will be 0-1. Girl is playing S and he's playing B, 0-2, and SS is 1-0. Now when we calculate the payoffs now for the boy, it is BB1 and BB2. So this is BB1 and this is BB2. So we can say, we can calculate for both. So half into 2-1 plus half into 2-0. So here we will get 2 plus 2, 4 divided by 2 is 2. And this will get 1/2. Is this calculation clear again? Yep. Yeah, okay. So similarly, now we can calculate for this also, BB1. So BB1 and BS2. So BB1 remains this same, and BS2 will be the girl has played S2 and he has played B01. So when you calculate, so already I've calculated that. This is the full part, and here you get the, these are the payoffs. And once you get this, now we can use simply best response method to get the Nash equilibrium. So when you use the best response, here for the boy, the best response
is 2 here, 1, 1, and 1 here. When we see for the girl, in this case 3 by 2 is there, and in this case 1 is there. So you get next equilibrium 1 3 by 2. Okay, सुनो and ना this, ललित जी, जस्ट हाँ एक जी, मिनट। या ये ऊपर जो एक वो बताया था ना, जो डायग्राम में ऊपर ओके बताइए। क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक सेटअप में, हाँ सेटिंग में, ये यस, नीचे नंबर्स कैसे निकाले, 2100 ये वाले? ओके ओके, सो सी दिस इज द this part okay, is for the meat type. Okay, so this part of the game is this game, and this part which is there, this part is the our type. ठीक है, ओके। Okay, now we come here. For example, this girl plays b1, so here this is b1, and if she plays b1 and the boy plays b, so it is bb, so we will take from here to 1. अच्छा अच्छा, जस्ट वी आर पिकिंग द चॉइस का एंड जस्ट पिकिंग फ्रॉम दिस, ये क्या बोलते हैं इसको, द मैट्रिक्स, या? Yes, yes, yes. So ओके ओके, all these अंडरस्टूड। four values they have come from here, and these four values they have come from here. ठीक है, थैंक यू। Okay. So this equilibrium which we got in this case, in where like, incomplete information is there, one player is better informed, the another player is less informed. So this is known as the Bayesian Nash equilibrium, or B and E, because we are putting a condition. Okay. Now, from the theoretical part only, professor explained the formulas for Bayesian rules. However, these formulas, they don't come handy in week 6. They will come handy in week 8. So once we will do the revision for week 8, we can cover that. But just for the completeness purpose, what is the formula for Bayesian rule? Probability of A happening provided B has happened into probability of B is equal to probability of B happening when A has happened is equal to probability of A. So from here we can get probability of A conditional over B is equal to for A into probability of A divided by probability of B. So this is the base rule. इसको याद रखने का एक अच्छा सा शॉर्टकट है कि जो भी यहाँ पे नीचे आता है यहीं पर सेम है कि यहाँ पर आता है. So this will come handy, like I said, in week 8. So we'll cover it again. So first part is clear till now. How to find a Bayesian Nash equilibrium in incomplete information game. Is that clear? Hello, can somebody acknowledge? Okay. Yeah, clear. Yeah. Okay. Now in the next part, the professor covered that if we try to find this Bayesian Nash equilibrium using the mixed strategy, also we get the same Nash equilibrium. Okay, and how to find this? So he covered, I will cover this also here only. Or I will explain. So again, we go with the conditions we had played earlier also in this, that boy plays B with a probability of X. So probability of playing S will become 1 minus X. Similarly, girl plays in first game with Y. This becomes 1 minus Y. Here there is a different type of girl. So this remains same, X and 1 minus X. Here it becomes Z and 1 minus Z. So this is the setting of the when we are playing with a mixed strategy. So see, when you are playing mixed strategy, the payoff for girl in game 1. So please focus on this part. This is X, this is 1 minus X, this is Y,
and this is 1 minus 5. So for the girl, if she plays B, so her payoff will be 1 into x, this one, plus 1 minus x into 0, which becomes x. For payoff from S will be x into 0 plus 2 into 1 minus x. So this part here. So she will play B1 only when x is greater than 2 minus 2x, which gives us that x, if x is more than 2 by 3, then the girl will play B. And what is the meaning of this? It means x is greater than 2 by 3 means that if x is equal to 1, for example, the boy is playing B, then y also becomes 1. So y, she will also play B in this case. Is this clear okay, till now, what I have covered on this part? May just 1 second, huh? I will Yeah. just this thing. Yes. So this practically what we were doing, that mixed strategy Yes. earlier. Yes. Similar type of approach we have taken. Yes. So what we have done here, we have found out that what is the payoff of the girl for case one, for if the boy plays B. So we have found out the payoff. Yeah. Yes. So we found out that x is greater than 2 by 3. है ना? No, I'll tell you. What we have found out, the payoff of the girl if she's playing B. Acha, payoff of the girl if she is playing B. Yes, yes. So I will come here again. For example, payoff of the girl is this and this. Correct. So if she plays B, her payoff will be 1 into x plus 0 into 1 minus x. Barabar. This is for B1. Okay. So this becomes x. If she plays S, then her payoff will become 0 into x plus 2 into 1 minus x. Yes, yes. This is for S1. So this Yes. will become 2 minus 2s. So she will play B1 only when x is greater than 2 minus 2x. Yes. Okay. So it means your So x becomes greater than 2 by 3. Yeah. 2 minus 3x, or x becomes greater than 2 by 3. Yep. Now, if we take this x is greater than 2 by 3, for example, if we take x is equal to 1, that is the maximum value. X is equal to 1. Yeah. And if she's playing B1, it means y is equal to 1. Yes. Okay. So this is the meaning. Okay. Now, the second case is that if x is less than 2 by 3 and greater than 0, then what will happen? Then she can play either B1 or S1. नहीं, ये कहाँ से आया? Okay. देखो x जब 2 by 3 से बड़ा है तो she will play B1. That is correct. Okay. But if x जो probability है, these are the probabilities. Correct. Now, if the probability of boy playing B is less than 2 by 3 and it has to be greater than 0 probability, then जो girl है, she can play either B1 or S1. ठीक है. Both will give her the same payoff. However, if x नहीं sorry. हाँ, वो equal to ना, वहाँ पे x is equal to 2 by 3. हाँ 2 by 3. ठीक है. चलो इसके बाद में नेक्स्ट है क्या, उस पर आते हैं तो ये पूरा समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ. Okay, so what we did है, we found that if x is greater than 2 by 3, then y is equal to 1. Correct. Okay, sorry, and I had faltered here. It No, was it is okay. नहीं, यहाँ पर क्या had faltered. This is for x is equal to 2 by 3. Yes. If x is equal to 2 by 3, then the girl can play B1 or S1. Correct. And if x is less than 2 by 3, then she will play S1. S1. Okay. Yeah. So these are the three. So y becomes 0. So here y becomes 0. So here Yes, y, yes. y will become y will become 0. Yes. Means okay. Similarly, for the second game, for the game 2, we find that x less than 1 by 3, then z is equal to 1.
Hmm. x is equal to 1 by 3, z is can be 0 at between 0 and 1, Hmm. and x greater than 1 by 3, then z becomes 0. So this is Yes. the second. ठीक है. Now, when we move for the boy, for example, in the first game, so his payoff are we are calculating he can play B in the both the games. Yes. So first game he plays with probability half. This is his payoff. Second game he plays with half. This is his payoff. So his payoff is y plus z for B. हाँ सही है. Okay. And then for S, his payoff is half y into 0 plus 1 minus y into 1 plus half 2 into 0 plus 1 minus z into 1. हाँ So सही here, है. okay, so here it becomes 1 minus y plus 1 minus z, so it becomes 2 minus y minus z by 2. So if he has to play B, y plus z has to be greater than this figure. Yes. Yes. So here we get y plus z is greater than 2 by 3, then he will play B. And B खेलने का मतलब क्या है कि x is equal to 1. Yes. Okay. Now, अगर y plus z is equal to 2 by 3 है, then he can play both B and S. If y plus z is less than 2 by 3, he will play S only, which means x is equal to 0. Now, just take a case, x is equal to 1. So we found out if x is equal to 1, then y will be equal to 1. ये कहाँ से आया? If x is equal to 1. x is equal to 1 यहाँ से पहले वाले गेम से देखो, अगर x greater than 2 by 3 है, हाँ. तो girl was playing b1, which means y is equal to 1. हाँ ठीक है. Okay, so x is equal to 1, so we get y is equal to 1. हाँ ठीक है. And इस वाले second case से अगर आप देखेंगे, if x is 1, then z becomes 0. हाँ yes. Okay, so z is 0. Now use this y and z की value. y plus z क्या हो गया? अपना 1 हो गया, Hmm. which is greater than 2 by 3. Hmm. And condition क्या है? If y plus z is greater than 2 by 3, then x is equal to 1. Hmm. So this is also true and this is also true. So there is a net equilibrium. There is no contradiction. ठीक है. लेकिन अगर हम दूसरा केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल, इफ x is equal to 0, Hmm. then y is equal to 0 Hmm. and z is equal to 1, Hmm. and y plus z जो होता है 1 हो गया, हाँ. greater than 2 by 3. लेकिन उस कंडीशन के लिए x is equal to 1 होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसको. Hmm. So this is not a net equilibrium. अच्छा. Hmm. So we got the same result जो b1 b2 bs2 b2 s2 था from mixed strategy also. Hmm. So main takeaway from these two parts till now what we have covered, that whether we follow the mixed strategy or we use the earlier method, we will get the same BNE, Bayesian net equilibrium. ठीक है. Okay, so this is can be theoretical part के वो है. Otherwise, we will get the same Bayesian net equilibrium. तो एग्जाम में तो हम लोग पहले वाले से कर लेंगे ना, वो पहले सिंपल, पहले थोड़ा वाले से सिंपल करें. मेथड है. Yeah, yes, that is an easy one. So we can write down what are the important concepts till now. Concepts है क्या? अभी हमने क्या cover किए? Number 1, incomplete information. Information. उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? उसमें एक better informed होता है, एक less informed होता है. Okay, how to set up that game? How to set up the game and find BNE. Okay, third क्या important takeaway is there, that BNE remains same for mixed strategy also. Okay, ये हमारे अभी तक takeaways हैं. Okay, ठीक है. yes. Now we go to the second concept है क्या? Second concept है आपका cooperative game theory में, कि why when the players है क्या, they start cooperating with each other. Okay, so there can be two types of game theories. One is cooperative, another is non-cooperative. So he covered what are the different names also. Like non-cooperative is also known as procedural, algorithmic, and rule-based. Whereas cooperative game theory is also known as combinatorial, conditional, and freewheeling. So this is from the theoretical part of view. Now, when do the players they cooperate? So he has given an example
that there are three players, 1, 2, 3. Player 1 is a seller and player 2 and 3 जो है वो they are potential buyers. Player 1 has something which he wants to sell for rupees 400. And each buyer 2 and 3, they are interested in buying at most one unit. Player 2 can purchase that for 900 and player 3 can purchase 1100. Okay. So first of all, we find the power set. Okay. So power set, if there are three players, we can get power set is 2 to power n minus 1 because 5 is not a set again that. Okay. So we can get, for example, in this case, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. So these are the power sets. Okay. They're the 8 okay, power sets. Now think 1, 2, 3 in isolation, they are not getting any value. Which one? If we take 1, 2, हाँ ठीक है 3 and 2, 3 बराबर also, because in 2, 3 बराबर also there is no seller, there is no buyer. So they मतलब are कुछ well, इंटरेक्शन उनमें होना चाहिए for you to get some yes, value. yes. Now 1, 2, जो value है payoff is 1, 2 is ready to pay 900. He is Correct. ready to sell for 400. Payoff is 500. 1, 3 is 700. And if we take the complete 1, 2, 3, then 1 will sell to 3. He will not sell to 2. Yes. So again, the value of this is 700. Okay, just give me a minute. There's a factor recording. So only Muskan is remaining here. What happened to other girls? क्या हुआ स्वरूपी आ रही जा रही हो नेट में गड़बड़ है नहीं नहीं वो एक कॉल करना था ओके Okay, there will be some noise again. Here, the factor they have started taking off. So till now, this is understood again, the interaction between the players and what are the payoffs. yes Okay. Now, in this, just some points. Okay, N is the total that full power set. Vn is the total value created. So in this case, okay, our total value is what? V of 1, 2, 3, and we got value 700. Then there is something concept called BATNA, best alternative to a negotiated agreement. Now think if all three are interacting, one will sell to 3 only for 700 for gain of 700. So BATNA will be what? Take a best alternative will be 1 to 2, and the payoff will be how much? 500. So if there is a question comes about BATNA, we can answer. Is that okay? Now we come to marginal contribution of a player. Marginal contribution क्या होता है कि जो total नहीं 1 second वो बांटना वाला समझा नहीं मुझे हाँ सी बांटना में what we said that best alternative to the negotiated alternative so yes best was for him to sell to 3 yes to get a payback of payoff for 700 rupees yeah yes yes but then why we are telling Batna is 1 to 2 with payoff okay of 500 so BATNA क्या होता है? It is an alternative. okay Okay, so what is an alternative? Like 1, 2, 3. So already accepted is 1, 2, 3. अच्छा understood And the best alternative is what? 1 to 2. okay it is just that we have got only 3 players so it's working but supposing you have n number of players Yes. then you can have understood yeah Yes. So it is the best alternative. Now we come to the marginal contribution. So marginal contribution of any player is what? That what is the total value with that player minus total value without that player. That is a marginal contribution. So in this case, if we can calculate for marginal contribution of 1 is V123 minus V23. 1 को यहाँ से निकाल दो. So V123 is 700. V23 was 0. We know that 2, 3, they cannot do anything. So MC1 is 700. MC2 is V123 minus V13.
700 minus 700 is 0. MC3 is V123 minus V12. 700 minus 500 is 200. Is that okay? Okay. Okay. Now there are certain definitions for a cooperative game. नहीं बट इससे क्या आपने को मिला ये जो मार्जिनल हाँ, अभी अभी कंट्रीब्यूशन अभी 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 आएगा ये हैंडी. ओके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, एक यहाँ पर प्लेयर 1 है, एक प्लेयर 2 है और एक प्लेयर 3 है. ये आपस में कॉपरेट क्यों करेंगे भाई, है ना? Why Okay. they should cooperate? They यस will cooperate only when that they are getting some payoffs x1, x2, x3 जो इनके फायदे का है. यस ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है और इसकी वैल्यू कुछ 1 होती है अकेले में, सो इसका x1 जो होता है दैट शुड बी मोर देन v1, तभी ये कॉपरेट करेगा. सही अगर ये कम है तो ही विल नॉट कॉपरेट. हम्म Okay, so I will come to those conditions. So we are just understanding some terms. Okay. ओके एक तो हमने वैल्यू निकालना सीख लिया प्लेयर्स का, फिर हमने मार्जिनल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया. Now these are the definition and allocation. Like I said, x1, x2, xn of number जो है, ये तभी इंडिविजुअल रेशनल होगा जब उसका जो xi है it should be greater than equal to vi, like I covered for x1, है ना? x1 व्हाट इज दिस x1 x2 ये क्या है क्या ये एलोकेशंस हैं कि इनको पे ऑफ्स कितने मिल रहे हैं वैल्यूज. अच्छा ओके, तो पहली बात तो इंडिविजुअल जो रेशनलिटी होती है कि दे विल कोऑपरेट ओनली व्हेन दिस x1 शुड बी ग्रेटर देन v1, x2 अच्छा शुड बी ग्रेटर देन v2 एंड x3 शुड बी ग्रेटर देन v3, तभी वो कोऑपरेट करेंगे. नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल रेशनलिटी. नंबर 1 पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मींस टोटल जो सम है इस एलोकेशन का इट शुड बी इक्वल टू द टोटल वैल्यू vn. ओके, दिस इज गिवन इन द जीए में भी इसका एक क्वेश्चन है. दैट्स आई एम कवरिंग थ्योरेटिकल पार्ट. ओके, एंड एक थर्ड क्या बोलते हैं मार्जिनल कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, लेकिन उसको मैं नटशेल में कवर कर दूंगा कि जो अगर मान लो कि आपके प्लेयर 1 एंड 2 कॉपरेट तभी करेंगे जब उनकी जो वैल्यू है, जब उसको आपस में जो वैल्यू मिल रही है जो x1 प्लस x2 से ज्यादा होगी, तभी कॉपरेट अच्छा. करेंगे. ओके है ना? इफ दे बोथ आर बेनिफिटिंग देन ओनली दे विल कॉपरेट. नॉर्मल अपना लॉजिक. ओके, सो इन कंडीशंस को इन्होंने इन दिस एग्जांपल दे हैव ट्राइड. क्या नाउ दीस x1, x2, x3 दे कैन बी एनी वैल्यूज टिल द टाइम दे आर fulfilling these conditions. So for example, in this example they have given, first of all x1 जो है वो less than equal to mc1 होना चाहिए. ये यहां से है. I have not covered this. जो इनका जो values हैं they should be less than equal to marginal contribution of that player. Okay, so ये किस कहाँ से x1 x2 x3 जो इंडिविजुअल है इट शुड बी लेस देन द मार्जिनल कंट्रीब्यूशन. हाँ, ये यहां से है. ओके ओके, थर्ड पार्ट से मार्जिनल कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल. सो एक्स यहां वो से इंडिविजुअल पे ऑफ्स है ना उनके x1 x2 x3. हाँ, देखो इसमें तीन चीजें थी कि जो xi है वो तो बड़ा होना चाहिए वैल्यू ऑफ i से, लेकिन x1 जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट वन. नंबर 2. नंबर 3 है दैट सम ऑफ ऑल xi शुड बी इक्वल टू v ऑफ n. दीस आर द 3 कंडीशंस. बट ये एलोकेशन निकलता कैसे निकालते हैं? जब आपकी कंडीशंस निकलेंगी तब अब निकल आएगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी करके बताऊंगा. सो दीस आर डेफिनेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव गेम. देन ओनली द प्लेयर्स दे विल कोऑपरेट, अदरवाइज दे विल नॉट कोऑपरेट. ओके Okay, so for example, in this x1 is less than equal to mc1, it means x1 is less than equal to 700. हाँ यस. x2 is less than equal to mc2. आपकी आवाज थोड़ी एकदम कम है. Fatter it up is taking off. Just give 10 seconds. Am I audible now? हाँ थोड़ा बेटर है. Okay, x2 is less than equal to mc2. mc2 was 0, so x2 हाँ यस. has to be greater than less than equal to 0. लेकिन वैल्यू तो नेगेटिव में नहीं जा सकती. इट मींस x2 is equal to 0 हो गया. Similarly, third में x3 is less than equal to 200. Yes.
तो इसमें हमारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए x1 x2 x3 पर। ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी आ गई यहाँ से vi से vn से कि इनका जो सम है वो 700 होगा मैक्सिमम। ओके। x2 0 हो गया तो x1 प्लस x3 700 हो गया। ठीक है। जस्ट गिव मी 10 seconds। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अच्छा अच्छा, ओके आई एम ओके। जस्ट टेकिंग अ पॉज। यस यस, ओके, I was just writing down this. नो प्रॉब्लम। So in this case scenario, if you see v1 is equal to v2 is equal to v3 is equal to 0, अकेले तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ हाँ सही है। ओके, सो ये जो थर्ड कंडीशन है हमारी, ये वाली जो थी यहाँ पे कि जो वी एक्स आई शुड बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू वी आई। तो x1 x2 x3 यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इनको यूज नहीं किया। अब ये जो तीन कंडीशन है यहाँ से आप देखेंगे कि जो x3 है, x3 विल बी greater than equal to 0 but will be less than equal to 200 from here. x1 will be less than 700 greater than 0 and x2 आपका 0 आ गया। तो अब एलोकेशन अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3, x1 को हमने 200 दिए, x2 को 0 दिया, x3 को 500 दिया। हाँ, तो इज इट अ वैलिड अलॉटमेंट? हाँ वैलिड, यस। Okay. Similarly, 500, 0, 200, it will also be valid allocation. बट ये तो इन्फिनिटी का टाइप का एलोकेशन आ गया ना, इनफाइनाइट नंबर। Yes, 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 yes. जब तक इनका वो चल रहा है, अच्छा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअली है कि why the players they cooperate. So these are the three conditions which will allow them to cooperate. Okay. अगर मान लो कि ये जो x1 है, it becomes greater than MC1, then उस प्लेयर की उनको जरूरत नहीं है, that player is not required in the game. अच्छा। Okay. इसके बाद में आई मीन ही विल नॉट कोऑपरेट बिकॉज़ दैट इज व्हाई ना। यस यस। ना उसके बाद एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थी जो प्रोफेसर ने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं की थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर। तो कोर का मीनिंग होता है कि जो भी एलोकेशन है, अभी जस्ट नाउ वी सॉ द एलोकेशन x1 टू xn। ओके, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। ओके, am I audible now? हाँ, यस। Okay. Now the second concept is that the core, that any allocation which is there, it will be at the core of the game if it is efficient. Efficient हमने पहले देख लिया कि sum of xi जो vn होना चाहिए, this is known as efficiency. Okay, number one. Number two, जो marginal contribution of subsets हैं, उन जो xij, for example if there are two players which are interacting और x से उसको मिल रहा है, it should be greater than equal to vij उनकी वैल्यू से। नंबर टू, हमने देख ही लिया कि xi जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए उसके इंडिविजुअल वैल्यू से। जब ये थ्री कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाती हैं, देन वी कैन से कि दिस एलोकेशन इज इन द कोर ऑफ द गेम। और ये एक्सआईजे भी फिर से निकालना पड़ेगा ना? हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिर से यहाँ पे बता दिया, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे देयर आर 3 प्लेयर्स। ओके, यहाँ पे सेलर बायर कुछ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि इफ ऑल 3 ऑफ देम दे आर इंटरेक्टिंग देन द पे ऑफ इज 100। ओके। If 1 2 is interacting, then the payoff is 70. 1 3 is interacting, then it is 60. If 2 3 are interacting, then payoff is 50. Individual payoffs are 40, 20, and 30. अच्छा। So now see what are the core क्या conditions हैं. Core की number first condition है efficiency, that x1 plus x2 plus x3 should be equal to total 100. Number one, first condition. x1 plus x2, x1 plus जो x2 है, ये जो इंट्रैक्शन है v12, x1 plus x2 should be greater than equal to 70 first. ठीक है। x1 plus x3 should be greater than equal to 60. x2 plus x3 should be greater than 50. This is the second part here. This is known as correlational rationality. दो आपस में कोरिलेशन कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, तो उनकी जो कंबाइंड वैल्यू है इट शुड इंक्रीज फ्रॉम दिस वैल्यू, ठीक है। देन ओनली दे विल कॉपरेट. थर्ड कंडीशन इज दैट जो उनकी इंडिविजुअल वो है दैट शुड बी मोर देन देयर वैल्यू. एंड व्हेन वी पुट दिस कंडीशंस देन वी कैन से कि कौन सा आपका वैलिड एलोकेशन है. तो दीस 3 कंडीशंस शुड बी मेट फॉर कोर. ओके। So a question might come कि भाई these are the conditions and this is the allocation. So is it at the core? हाँ, yes. Okay, so we can check these conditions. Correct. Okay, so this is one concept. So I'll share again this document. जो last document था उसमें ये नहीं था. Okay, okay. Now, so we have seen the second concept. Okay, so I will write down here. So, right. Fourth हमने concept यहाँ देख ली, cooperative market theory की. Cooperative game theory. Allocation. इसमें ये वाली जो कंडीशन है ये याद रखने वाली है कि xi जो है शुड बी ग्रेटर देन vi होना चाहिए. सम ऑफ xi जो है वो vn होना चाहिए, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं. करेक्ट. और अगर कोई xij है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू vij. हाँ, इसका भी कुछ नाम था ना. कोलिशनल रेशनैलिटी. ओके. रेशनैलिटी ये है इंडिविजुअल रेशनैलिटी. रेशनैलिटी तो ये कंडीशन है आपकी कोर की. ओके. और जब हम जाते हैं एलोकेशन पे कि कौन सा एलोकेशन ठीक है, उसमें फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन सेम रहती है और थर्ड एक कंडीशन आ जाती है कि जो xi है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू mci. उसके लिए रहता है एलोकेशन. अच्छा, 1 2 सेम रहती है और थर्ड इज कि अच्छा इंडिविजुअल जो है उसकी मार्जिनल उससे कम रहनी चाहिए. यस कम या बराबर. ओके. यस यस. तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है. सो वी हैव सीन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गेम, वी हैव सीन कोऑपरेटिव गेम कि व्हेन द प्लेयर्स विल कोऑपरेट एंड व्हाट विल बी देयर एलोकेशन. ओके. ओके. नाउ यही सब था इसमें. हाँ ये है इसमें. अभी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट लिंक्ड विद दिस. दैट्स आई एम कवरिंग वन बाय वन. ओके. नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट है ऑक्शन की. कि ऑक्शन कैसे होता है कि वी गो टू सम प्लेस, देयर इज एन आइटम and there are 2 players. For example, we take only 2 players. ये प्लेयर सोच रहा है कि इसकी जो वैल्यू है v1 है, ये प्लेयर सोच रहा है कि इसकी वैल्यू v2 है. तो इसमें ये प्रोफेसर हैज एक्सप्लेन्ड हाउ टू फाइंड द नेस्ट इक्विलिब्रियम इन दिस. क्या नेस्ट इक्विलिब्रियम होगा? ओके. सो ये बिड करता है b1 और ये बिड करता है b2. अच्छा, उनकी वैल्यूएशन उनके हिसाब से कुछ है बट वो बिड क्या कर रहा है. ओके. हाँ. एंड इन दिस व्हाट प्रोफेसर हैज कवर्ड कि इसकी जो वैल्यूएशन है, जो एग्जांपल दिया है उन्होंने बोला है कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन 0 to 1.
मतलब जो जो बंदा जो ऑक्शन कर रहा है उसकी वैल्यूएशन। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ मेरे V1 है, तो मेरे हिसाब से 0.1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा, फॉर V1 V2। यस, ओके। ठीक है। तो इसके लिए आगे चलते हैं। सो उसमें वही किया है उन्होंने कि पहले कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने एक्सप्लेन की है, दैट वी नो फ्रॉम आवर अर्लियर लेक्चर्स। क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस व्हाट इज fx, इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू इज लेस देन x, और द प्रोबेबिलिटी दिस से क्या। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जस्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन x into fx dx। ये किसी के लिए भी आपका लागू होता है। नाउ वी से CDF वगैरह निकाल लिया हमने, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, ये देख लिया। ओके, नाउ वी कम टू दिस इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए कि कैसे निकालते हैं इसका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। तो देयर आर टू बैट्स, वैल्यूज आर बिटवीन 0 and 1 and values are distributed uniformly on 0 to 1. So it means V1 and V2 uniformly distributed है 0 to 1. Now see what will be the payoff for player 1. It will be V1 minus B1 if bid Yes. 1 is greater than B2. मतलब that is because if he wins the bid, correct? No. Yes. Okay. If bids are same, then his payoff will be half V1 minus B1. अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट ही और मी कैसे है, हाफ ऑफ करके नहीं देगा ना, प्रोबेबिलिटी का नहीं नहीं नहीं, होगी। ये आपका आइटम है, मैंने इसमें 25 रुपीज बिड किया, इसने भी 25 रुपीज बिड किया, तो दोनों को प्रोबेबिलिटी मिल गई कि दोनों को मिलेगा। सही, वही मैंने ओके, बोला, उसकी यस यस प्रोबेबिलिटी हाफ हो यस गई। यस यस, एंड अदरवाइज इट इज 0। ठीक है। प्लेयर 2 की जो बिडिंग है इसको हम AV2 लिख सकते हैं, जहां पे A जो है 0 to 1 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। किसको, प्लेयर 2 का? बिडिंग जो है B2 जो है, AV2, हाँ AVA। हाँ, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि एक 100 रुपए की चीज है। फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 सोच रहा है कि दिस वैल्यू इज 100, प्लेयर 2 इज थिंकिंग इट इज 200। ओके, एंड प्लेयर 2 जो भी हम बिड कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं। मैं ठीक है, 0 से चालू करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक टिल है। 200। ओके, सो जो प्लेयर 2 की जो बिडिंग है इट इज A into V2, where V2 is, for example, in my example is 200 and A is a uniform distribution from 0 to 1. Is that okay? अच्छा, ठीक है, ओके। Okay. Now the payoff of player 1, नहीं मतलब हमने इसको वैसे क्यों नहीं लिखा V2 माइनस B2 करके? नहीं नहीं, हमने इसकी बिडिंग लिखी है, अभी सिर्फ बिडिंग अच्छा, लिखी है। इसकी बिडिंग है, ओके। What is the bidding? What he can bid? ओके। Now from these three conditions, 1 2 3, player 1 payoff can be V1 minus B1 into probability B1 greater than B2. यस, This is the first case. यस। Second is V1 minus B1 by 2 into probability B1 is equal to B2 सही सही। and plus 0 into probability, तो ये तो 0 हो जाएगा। Now we know in continuous distribution any spot probability which is there, it is always 0. हाँ। Okay, तो ये वाला टर्म 0 हो जाता है, ये वाला टर्म 0 हो अच्छा जाता अच्छा, है। इसलिए 0 था ये, ओके। तो payoff of P1 becomes V1 minus B1 probability B1 greater than B2. ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं B2 की जगह AV2। ठीक है। नाउ इसी को अगर हम उल्टा तरीके से लिखेंगे, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ V2 लेस देन B1 बाई A। A यहां पर आ गया। हाँ, ठीक है। इसको हम जानते हैं V2 इज लेस देन B1 बाई जो A है, और जहां पे वैल्यू इज ओनली 0 to 1 है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी, इट इज B1 बाई A। ये कहाँ से आया? ये आपका कॉन्टिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म, और उसमें हाँ। अगर 0 to 1 ही लेते हैं, अगर हम हम्म 0 to 1 लेते हैं, तो ये जो V2 है, फॉर एग्जांपल V2 लेस देन B1 बाई A है यहाँ पर V1, तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये सेम होती है B1 बाई A। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है। नाउ इसको अगर हम जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू B1, ये हो जाएगा V1 माइनस 2B1, बिकॉज ये B1 स्क्वायर हो गया। यस यस। इसको हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पे B1 इज इक्वल टू V1 बाई 2 आ गया। यस।
And same thing when we will do for player 2, we'll get B2 is equal to V2 by 2. ठीक है. And this is the next equilibrium. क्या V/2, V1/2 and V2/2? Yes. So इसमें theoretical point of view से ये देखो कि if I am competing with another player, I think the value is 100, he thinks the value is 500, then the equilibrium will be 50 and 250. अच्छा. Okay, so this is the next equilibrium. ये वाला, ये आपके ऑक्शन की कॉन्सेप्ट है. अच्छा, अभी समझा. ओके, सो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ. यहाँ पे राइट डाउन. ओके, ऑक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट आ गई आपकी ऑक्शन की. एंड ऑक्शन का एनी क्या आ गया हमारा? V1/2 and V2 पे. Okay, so this is the third concept. Now we go to next concept. Next concept is co-optation. Co-optation क्या है कि हम कॉपरेट भी कर रहे हैं, कॉम्पीट भी कर रहे हैं. तो हम कॉपरेट तब करते हैं जब हमें मार्केट ज्यादा बढ़ानी है. मतलब वी हैव टू create some demand for something which I and some other company is also producing. So first we have to increase the size of the pie, and second then we compete to get the larger piece of pie. So this word is co-optation. And बाकी इसमें बाकी आपका theoretical part है. अच्छा. Okay. Then है आपका the right game. What is the right game? So he gave an example of that Art of War by Sun Tzu, that if we play the normal game, then we know that attack and retreat is the next equilibrium. हाँ. But if the second player, if he changes the game, for example, he removes that island, जो है, तो उसमें retreat का option बचेगा ही नहीं. So when a retreat is not there, so then your player one will not attack. Correct. Because now you're different. So game can be changed also. The meaning is that. Okay. He gave another example, burning cards. When you burn some cards है क्या? अगर आपने burn नहीं किया है, तो आपका ये different equilibrium आया था. हाँ. Okay. And as soon as you burn the cards, then you get a lot of advantage. Okay. जैसे I'll just explain this. Okay, there are 51 players. 50 have player one जो है one single player है, it has got 50 black cards. Player two जो हैं वो कितने हैं हमारे? They have got one red card each and they are 50 players. हाँ. Okay. Now pairs possible when every black and red gets 1,000 rupees. So how many combinations we can have? We can have 50. So payoff will be 50 into 1,000, 50,000. हाँ. और जो प्लेयर वन है उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसकी 50,000 माइनस 0 है. हाँ. So it becomes 50,000. Whereas जो marginal cost है other players की will be 49,000. अगर एक स्टूडेंट को भी आप निकाल देंगे who has got a red card, then the value will remain 49,000. हाँ. So MC2 से लेके MC51 तक की जो values हैं they are 1,000. हाँ. तो X1, X2 up to Xn जो allocation है it can be 25,000. जो पहला प्लेयर है उसको 25,000 ले सकते हैं और बाकियों को वो 500 दे देगा. ठीक है. So this is rational allocation. Now, but if he changes the game, and how does he changes the game? He burns 5 black cards. Now, if he burns 5 black cards, total value will become 45,000, 45 pairs. MC1 is 45,000. हाँ. Now, but now MC2 से लेके MC51 तक वो 0 हो जाता है. Because if you remove that another player also, still value remains 45,000. यहाँ पे total value is 45,000. So marginal cost of all of this red के black card वाले जो हैं इनकी 0 हो जाती है. It means now जिसके पास black card है, now he can decide कि मैं तो maximum पैसा अपने पास रखूंगा, I'll not give anything to them. So just by changing the game, your allocation changes. That is the second example. जैसे यहाँ पर island हटाया तो आपका outcome change हो गया.
सिमिलरली यहाँ पे अपने कार्ड बंद किया तो आपका चेंज हो गया। थर्ड के इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि देर आर टू गेम्स, हमें पता नहीं है क्या है, ये गेम वन है, ये गेम टू है। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ हाफ होती है तो दोनों को सम करके बाई टू कर दें तो ये आपका मिल जाता है, एंड देन वी यूज बेस्ट रिस्पॉन्स मेथड, तो ये आपका नेस्कुलरिज्म आ जाता है, विच इज BL। लेकिन अगर प्लेयर टू को पता है, he has got more information, so it is an incomplete information, better informed and less informed. So if player 2 is a better informed player, he knows which game is being played. For example, he knows that game 1 is being played. So game 1 में वो क्या खेलेगा, देखो यहाँ पर 2E0 3E, ये 3E खेलेगा, यहाँ पर 3 खेलेगा। सो दोनों केसेस में क्या खेलेगा, वो R खेलेगा। इज दैट ओके? Similarly, if he knows that this game is being played, so इसमें 2E3 खेलेगा और इसमें 3 खेलेगा, तो इस गेम में ही वो क्या खेलेगा, he'll play M. So नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इस दोनों केसेस में, और अगर T से अगर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो दोनों केसेस में देखिए नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में जो प्लेयर 1 है वो T ही खेल रहा है, और प्लेयर 2 जो है वो R भी खेल सकता है और M भी खेल सकता है। तो योर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बिकम्स T और M। इज दैट ओके? नहीं, ये मेरे को उतना नहीं समझी, ये कैसे हुआ, एक बार ही बताइए दोबारा। हाँ, ये है कि अगर मान लीजिए कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, अगर इंफॉर्मेशन थी कि आप P दो गेम्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है और इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है, ठीक है। दोनों प्लेयर्स को पे ऑफ अगर अपना पता है, तो उसको जब हम करेंगे तो ये 1 2E प्लस 1 2E 1 2E हो जाएगा, ये 1 0, ये 1 3E, ये हो जाएगा 1 and 0 3E/2 हो जाएगा, ये 1 3, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम 2 2 0 3/2 0 3/2 हो जाएगा। एंड व्हेन वी यूज बेस्ट के रिस्पॉन्स, तो हमें पता पड़ता है कि ये नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है। ये है आपका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल। बट व्हाट हैपेंस इफ इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट एंड द प्लेयर 2 ही नोज व्हिच गेम इज बीइंग प्लेड, ही इज बेटर इन्फॉर्म्ड। ठीक है। सो इफ ही नोज दैट दिस गेम इज बीइंग प्लेड, इसमें बेस्ट रिस्पॉन्स देखिए आपका कौन सा है, 2E0 3 है, यस। यहाँ पे 2 0 3 है यहाँ पर, तो he will always play R for the game 1. R में इसको मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है ना प्लेयर 2 को, so he will play R only. Now if he knows that game 2 is being played, तो इसमें कितना है, देखो 2E3, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 3 है, इस केस में ये M खेलेगा। और दोनों ही केसेस में जो प्लेयर 1 है वो T खेल रहा है। तो आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में जो एनी आएगा वो आ जाएगा T, प्लेयर 1 विल ऑलवेज प्ले T, एंड प्लेयर 2 कैन प्ले R आल्सो, ही कैन प्ले M आल्सो डिपेंडिंग ऑन द गेम। सो दिस इज योर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम PNE। ठीक है, ठीक है। ओके, ये दिस इज सेम जैसे हमने पहले वो किया था गर्ल वाला केस जो था। ओके। ओके, सो ये आ गई आपकी कॉन्सेप्ट है कि ये यहाँ पर खत्म हो गई। इसके बाद में आपके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि कौन, हु इज द कंपटीटर एंड हु इज द कॉम्प्लीमेंटर। ठीक है। Okay, that you can go through. It is very easy. Yeah. Okay, Frander, for win lose parts है क्या? Certain है क्या? These theory parts are there. एक parts है क्या ये है? इसमें we should know what is the meaning. P is the players, A is the action set, A is the added value, R is the rules, tactics, and the scope. So you can go through this theory part. It is easy. ठीक है। Now we come to the GS. Just give me 2 minutes. Okay, I will take a break and have a glass of water, please. ओके। Yeah. कैसा चल रहा है शुरू पे? सब
बढ़िया। वो दूसरा क्या सब्जेक्ट है, एलएलएम? नहीं, मैंने सिर्फ सीएफ और जीटी लिया है। अच्छा, सीएफ और जीटी, ठीक है। अभी कितने बचे सब्जेक्ट्स, कल नेक्स्ट टर्म में खत्म कर रहे हो? और एक टर्म। अच्छा, 2 और टर्म्स अभी, हाँ? नहीं नहीं, ये वाला टर्म और एक टर्म। हाँ, मतलब नेक्स्ट टर्म में खत्म हो जाएगा ना? हाँ। ठीक है, ठीक है। आपका? चलो मेरा तो ये लास्ट, अभी ऐसा मन कर रहा है बस खत्म करो इसको, बस हुआ। प्रोजेक्ट में कितने मिल गए तुम्हारे, लोग हो गए प्रोजेक्ट के? किसका प्रोजेक्ट? अच्छा अच्छा, नहीं वो तो एमआर में है, सॉरी सॉरी। एमआर मे बी आई टेक इन नेक्स्ट टर्म। अरे वो बिल्कुल ही सिंपल है, एमआर। अच्छा। हम्म। अच्छा है फिर। आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए इस टर्म में? ये जीटी, एमआर और डीएलपी। अच्छा अच्छा। Okay, now shall we do the GS? यस यस। या। Okay. So the question number one is consider the following second price के sealed bid. So this was quite confusing. I had to do some research to find. So हम्म। second price के sealed bid होता है कि if you win the bid, then you pay जो second उसने किया है competitor वाला, right? मतलब जो आपके बाद वाला है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 200 किया, उसने 100 किया, आप जीत गए, तो आप 100 पे करेंगे. अच्छा। Okay, this is the second price. So two individuals A and B are competing in an auction to obtain a valuable object. The bids must be in multiples of 100. Maximum they can bid is 500. Must be in multiples of NF 100. The valuation of the objective A के लिए 400 है और B के लिए 300 है. Write down the strategic form of the game. In case of a tie, individual A gets the object. Okay, this is important. ये What क्या is है, the इंडिविजुअल ए गेट्स द ऑब्जेक्ट, ओके, इन हाँ, केस ऑफ अ टाई। अच्छा। what is the value of payoffs corresponding to actions of both players when they bid their maximum valuation? Maximum valuation कितने? 500। 400 and 300. ऐसा ये क्यों, 400 300 कहाँ से आया? ये वैल्यूएशन है. अच्छा अच्छा, वैल्यूएशन, ओके ओके हाँ, ओके। कि जब वो मैक्सिमम वैल्यूएशन अपना बिड कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऑफ कितना होगा. ओके ओके ओके। नाउ व्हाट प्लेयर ए कैन बिड, क्या ही कैन प्ले 0, 100, 200, 300, 400, 500. यस। सिमिलरली प्लेयर बी भी 0 ये कर लिया और इसकी वैल्यू है 400, इसकी वैल्यू है 300. हम्म। इन केस ऑफ अ टाई प्लेयर ए विंस. हम्म। सो इसका बना लीजिए आप क्या. अच्छा। सो केस देखिए, 0-0. 0-0 में प्लेयर ए जीतता है. हम्म। He does not pay anything and his value is 400. His payoff is 400. हम्म। In case 0 and 100, he pays 0. So his हम्म। payoff is again 400. हम्म। 400, 400, 400, 400. ठीक है ठीक है। 100, 100 वाला केस देखिए. 100, 100 में player A wins, but he pays 100. So ओके। his payoff is 400 minus 100. हम्म। So it is 300. 0, 100 में player 2 जीतता है. He pays 0. Okay, and his payoff is 300. 0, 300 हो गया. हम्म। बाकी 300, 0, 0, 0, 300, 0 हो गए. हम्म। सो इसमें जैसे आप ये लगाएंगे तो ये पूरा 0, 300, 0, 300, 0, 300, 0, 300 हो जाएगा. हम्म। यहाँ पे 0, 200, 0, 200, 0, 200. तो दिस इज इजी ठीक है। कैलकुलेट है ना. तो इसमें 400, 300 में उन्होंने पूछा कि 400 एंड 300 में क्या पे ऑफ होगा. सो अच्छा। 400 एंड 300 योर पे ऑफ इज 100 and 0. ओके। अदरवाइज वैसे भी करके दे सकते हैं. 400 किया इसने, 300 इसने किया. जीता कौन? 400 वाला. उसने पे कितना किया? ओनली 300 किया. तो उसका पे ऑफ कितना हो गया? 400 माइनस 100। 300. और नंबर 2 जीता नहीं, उसकी वैल्यू 0 हो गई. तो 100 जीरो। है. करेक्ट। ओके. नाउ सेकंड उसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम. सो जब इस गेम को आप लेंगे और बेस्ट रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आते हैं आपके. अच्छा। ओके.
एंड उसमें अगर देखेंगे तो 400 आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस ओनली 400 300 ही आपका नेस्कुलरियम है। अच्छा, ये कैसे हमने किया ये? अच्छा, ये सब ऐसे चूज करके देखा सर, हाँ, चेक हाँ, करके। जो बेस्ट रिस्पॉन्स है हमारा। अच्छा। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए फॉर प्लेयर 1 के लिए देखिए, हम्म। पहले इसमें देखेंगे तो इसमें 400 400 400 है, तो हम्म। 400 सारी वैल्यूज आ गई। हम्म। इसमें आ गया 300 300 300 300, हाँ हाँ। इसमें 200 200 200, ठीक है। इसमें 100 100 100, हम्म। इसमें 0 0 0 0 सारे, हम्म। इसमें भी 0 0 0 और माइनस हम्म। 100 नहीं आएगा। हम्म। नाउ वी सी फ्रॉम प्लेयर 2 साइड, प्लेयर 2 में 0 300 300, तो ये 300 300 आ गए। हाँ। यहाँ पर आपके आगे 200 200 200, यहाँ पे 100 100 100, हम्म। यहाँ पर आपके ऑल जीरोस, ठीक है। यहाँ पे भी ऑल जीरोस, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑल जीरोस। ठीक है। तो जहां पर भी आपके दोनों होते हैं वो आपका नेस्कुलरियम होता है। ठीक है। सो नाउ यू कैन स्टार्ट चेकिंग। 0 0 0 0 नहीं है, 100 0 100 0 नहीं है, 200 100 200 100 नहीं है, ओनली 400 300 है, 400 नहीं, 300। कहाँ पे देख रहे हैं हम? क्या नहीं है का क्या मतलब? ये तो हमने सारे जो आपने गोले गोले लगाए तो सारे नाइट्रोक्लोरम थे ना ये? लेकिन ये नहीं है ना, ये जो चॉइसेस हैं मल्टीपल क्वेश्चन हाँ, है ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ओके ओके, ओके ओके। ओके, समझा that's समझा। okay. Then second question is, this game has unique nescularem? No, it has got many. यस। Infinitely many nescularem? No, it has करेक्ट। got only finitely many nescularem. करेक्ट। Okay. Then again, which action is not weakly dominated for individual A? ठीक है, ये Okay. तो पहले जैसे निकाला वैसे ही जैसे ना। हम weakly dominated जो निकालते हैं, है ना, तो निकल आएगा। Similarly, what is not weakly dominated for individual B? वो भी ठीक निकाल है। लेंगे। Now consider the same auction in first price field. So first price में क्या होता है कि you pay your bid, ठीक है। your bid. तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं, ये बन गया पूरा फुल। ठीक है। और इसमें कर लेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पे ऑफ रिस्पोंडिंग टू बिड देयर मैक्सिमम। सो अगेन 400 एंड 300 इट विल कम 0 0, बिकॉज ठीक है। 400 300 में क्या होगा, प्लेयर ए जीतेगा, ही विल पे 400 हम्म। और हम्म। इसकी वैल्यूएशन इज 400, सो हम्म। हिज इज 0 एंड ही करेक्ट। लूजेस हिज इज 0, so 0। करेक्ट। Now again, like which one of the following is an equilibrium? Again, you can use the same what we had used earlier. ठीक Okay. है। इस पर भी इसका 200 200 मतलब you have to keep on checking कौन सा है ठीक है। कौन सा नहीं। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, तो उसके बाद में मेरे को इसमें क्लैरिफिकेशन मिला। ये वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है जीए में, ओह अच्छा। ओनली डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसका फर्स्ट पार्ट ये था कि कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हम्म। टू which are distributedly independently and uniform over 0 to 1. So they are ठीक है। 0 to 1 and this is uniform. So what is the difference of probability that x lies in 0 to half? 0 to half, तो इसकी probability कितनी हो जाएगी? Half. इसके हाफ, यस। And 3 by 4 to 1, यहाँ पे 3 by 4 आ गया और ये 1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1 by 4। 1/4, यस। तो इनका जो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 by 2 minus 1 by 4 is equal to 1 by 4। डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस पूछा है, ओके। Then second, what is the probability that both x and y lie in the interval 1 by 2 to 3 by 4? So 1 हाफ by ना? 1 नहीं, by ये 1 by 2 to 3 by 4, 1 by 4 होगा। हाँ। एंड दोनों x and y क्या है? इंडिपेंडेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो probability of x and y will become probability of x into probability of y. ठीक है। So ठीक है। 1 by 4 into 1 by 4 is equal to 1 by 60. Okay. इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन है जो व्हाट वी हैड सॉल्व फॉर दैट गर्ल वाला। अच्छा। इसमें इन्होंने ABCD PQRT निकालना है, तो जैसे हमने वहां पर कैलकुलेट किया था, ओके 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 ओके। तो वही करके BB1 है ना, BS1, सॉरी, ठीक है। ठीक है। उसी को एक्सटेंसिव फॉर्म करके इजीली निकल जाएगा, देयर इज नो इशू। ठीक है। ठीक है। ठीक है,
ये आ गया थ्योरेटिकल पार्ट, क्या जो हमने कवर किया था, कोर एंड एफिशिएंट वाला। यस यस तो यस, एलोकेशन एफिशिएंट होता है जब सम ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वी ऑफ एन, दिस वो इज कॉल्ड हमेशा ही ना, हमेशा यस ही ऐसा। एफिशिएंसी। इंडिविजुअल रेशनल कब होता है, जब आपका एक्स आई जो है वो शुड बी, ग्रेटर देन देयर मिनिमम, वो एमसीआई। यस, अच्छा इन वी व्हाट, आई, ओके। हाँ, in what player I gets is at least as much as the value he creates by remaining alone. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Okay, this is individual rational. And core कब होता है? The core in a cooperative game is defined as the core of a TU game NV is the set of all payoff allocations that are individually and coalitionally rational, ठीक है, along and efficient. Okay, ये यस। तीनों पॉइंट्स हमने देख लिए थे। तो इसमें फिर से मैं कवर कर देता हूँ। 3 पॉइंट क्या है? एफिशिएंट है फर्स्ट, क्या एफिशिएंट sum एफिशिएंट x1 plus x2 xi is equal to v of n. Okay. VFN, यस। Number 2 is individual rational. हाँ, वो XI should be greater than VI, greater than equal to। v है ना? एंड थर्ड आ जाएगा आपका कोएलिशनल, कोएलिशनल रेशनल, कि जब आपका जो वैल्यू दोनों ऑफ का जो एक्स है XIJ 1 2 greater शुड बी than देन v, VI, J। है ना? ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन। बस खत्म हो गया। Yes, with this I have finished. Okay, in case of any question, anything I can answer. Okay, that was a nice session, thank you। Yeah, so it had okay, some 4 5 important concepts. इसमें मतलब what I'm experiencing, the professor is not able to link. Okay, he is not able to say that. Okay, you know this is the important concept. He just keeps on going. So we don't even know what has been started. हाँ सच्ची बात है, है ना? यू आर राइट। Yeah. चलो, okay. Thank you. Have a very nice ओके, day. अभी वीक 7 कभी करेंगे? Week 7 का maybe day after tomorrow. सैटरडे तो मुझे नहीं, इवनिंग, सैटरडे नहीं, हाँ संडे को करेंगे। सैटरडे मेरा भी कमिटमेंट है। तो फिर ठीक है, संडे को करेंगे। Yep, कितने yep. बजे? Evening somewhere.